Hello, dear students. Good morning. Today we are going to study first the concept of electric resonance कि resonance का basic meaning क्या है. तो इसके लिए हम लोग पहले कुछ examples consider करते हैं. Such as आपने एक टाइप का suspension bridge देखा होगा. So, what is the reason whenever soldiers cross the suspension bridge, they are commanded to stop the march? Because इसका एक reason है कि bridge अपने आप में एक natural system है और जब उसके ऊपर से soldiers cross होंगे तो soldiers उसके ऊपर एक external energy force exert करेंगे and if the frequency of vibration of the bridge is equal to the frequency of the force applied by soldiers, then bridge will come in the state of resonance, and in the state of resonance any system will vibrate with the maximum amplitude and hence it will carry the risk of collapsing. Therefore, they are commanded to stop the march. Second example है इसका किसी ऑर्केस्ट्रा में आपने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया होगा कि अ ग्लास ब्रेक्स डाउन. सो व्हाट इज द रीजन अगेन? बिकॉज ग्लास इज अ नेचुरल सिस्टम जिसमें उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट हो सकते हैं. सो व्हेन इन ऑर्केस्ट्रा द म्यूजिकल ऑर्गन्स आर प्लेइंग, then the frequency of glass is equal to the frequency of external periodic force, that is musical organs play in the orchestra. Then again the resonance phenomena occur. So hence we can say that in the resonance phenomena at a particular frequency, at a particular frequency, when the natural frequency of oscillation of system is equal to the frequency applied by the external periodic force. क्योंकि वो फोर्स आपको रेगुलर इंटरवल पर लगाना होगा, आप उस फोर्स को बाहर से अप्लाई करेंगे with the help of some external agent. Therefore, it is called as an external periodic force. Then the phenomena of resonance occurs. So resonance के केस में हर समय एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाएगा. आपको इस बात का ध्यान रखना है. एम्पलीट्यूड मीन्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम or amplitude becomes large, then the condition of resonance occurs. Now we are talking for the electric resonance. तो इलेक्ट्रिक रेजोनेंस में आपके पास दो टाइप के रेजोनेंसेस हैं. फर्स्ट इज द सीरीज रेजोनेंस सर्किट and second will be the parallel resonance circuit. So first comes series resonance circuit. Definition में you may just observe the diagram. This is a circuit. So a circuit in which inductance L, capacitance C and resistance R are connected in series with an alternating source of instantaneous EMF E. This is called as series resonance circuit. अब इस सर्किट में जब भी रेजोनेंस अकर होगा, whenever resonance will take place, that the frequency of oscillation of this LCR series circuit will be equal to the frequency of this external EMF source, that is external periodic force. Then we will say that the resonance occurs. So in the series resonance condition, we can say that the circuit will admit maximum current. ठीक है, because आपको current amplitude मिल जाएगा. And we have studied in the previous lecture
that the impedance Z of LCR circuit is expressed as under root of R square plus XL minus XC bracket square. Now we have also studied that the expression for inductive reactance is omega L. It means 2 pi f L, and the expression for capacitive reactance is 1 upon omega C, means 1 upon 2 pi f C. So आप relationship check करो. XL is directly proportional to the frequency and XC is inversely proportional to the frequency. XL का relationship direct है और XC का relationship frequency से inverse है. So whenever you will be taking the case of low frequencies, ठीक है, हम लोगों ने frequencies को reduce कर दिया. So we are taking low frequencies, then XL will be negligible because XL is directly proportional to frequency, but the value of capacitive reactance is going to be very, very high. ठीक है, अब धीरे 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 लो से हम फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीज करते जाएंगे. सो व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस वी कैन से दैट XL going to increase and XC going to decrease. So at some particular frequency हम एक particular value लेंगे और at some particular angular frequency, suppose we are saying it omega subscript R, R stands for resonance, we get mathematical condition for XL equal to XC, means inductive reactance becomes equal to capacitive reactance. Or if we put its formula, we can write omega R L equals to 1 upon omega R C. ठीक, सो आपको रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का आंसर मिल जाएगा ओमेगा आर स्क्वायर equal to 1 upon LC. So this will be giving omega R equal to 1 upon square root of LC. So just take care of this relationship whenever we are asked to find the resonance angular frequency. This is just 1 upon square root of LC. But whenever in the question it is asked just to find the resonance frequency, this will be 2 pi fr equals to 1 upon square root of LC. So we can get the resonant frequency, that is fr equal to 1 upon 2 pi square root of LC. ठीक है, this is the answer for resonant frequency. So at this particular frequency, first point is XL equal to XC, that is inductive reactance is equal to capacitive reactance. So suppose we find impedance now at the condition of resonance. So this is equal to R square plus XL minus XC will be 0 square. So this is just equal to R. So at resonance condition, we are going to get the impedance of the circuit numerically as the minimum value. ठीक है, आपको इम्पीडेंस मिल गया मिनिमम और उस समय इम्पीडेंस इक्वल हो गया रेजिस्टेंस के. सो अदर फैक्टर कैन बी सेड एज द सीरीज LCR circuit in the condition of resonance behaves as the purely resistive circuit. The purely resistive circuit, and in purely resistive circuit we have already studied that
current and voltage are in the same phase. Same phase. Hence, we can say that I0, which is equal to E0 upon Z, because Z is R now, because XL equal to XC. So this is equal to E0 upon R. So current will be maximum because now the impedance is minimum in the condition of resonance. So the condition in which the current becomes maximum is called as the resonance condition, and the frequency Fr is called as the series resonant frequency. So these are the main points or characteristics of series resonant circuit. In this, again we are revising all points. First, that XL equal to XC, then resonance occurs. Second, the impedance of the circuit becomes just equal to the resistance of the circuit, which will be minimum, and hence the circuit will behave as the purely resistive circuit according to third condition. Then fourth condition is current will have the maximum value, and hence this can be denoted by I0 equal to E0 divided by R, because in this case impedance of the circuit is equal to the resistance of the circuit numerically. ठीक है, तो जब इस कंडीशन में आप सीरीज एलसीआर सर्किट को रेजोनेंस कंडीशन में बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज फीड करेंगे, सो उसमें से ये सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करेगा, which is equal to the resonant frequency, and it will reject other frequencies. ठीक है, अदर फ्रीक्वेंसीज को ये रिजेक्ट कर देगा. Therefore, series LCR circuit in resonance condition is also called as series LCR circuit in resonance condition is also called as acceptor circuit. So why acceptor? Because it accepts only the value of resonance frequency to make the value of the current maximum and to make value of the impedance minimum, such that the minimum impedance becomes numerically equal to the resistance of the circuit. Now, if we plot a graph between the resonant frequencies, other frequencies, and the current flowing in the circuit, we can call that curve as the series resonance curve. So this is the curve which is called as series resonance curve. As we can see, on the x-axis frequency is expressed, and on the y-axis the current flowing in the series resonance circuit is shown. कि पहले तो आप LCR ही बोलेंगे कि this is series LCR circuit. अब धीरे धीरे पहले हम लोगों ने लो फ्रीक्वेंसीज ली थी, सो दिस इज द लो फ्रीक्वेंसी. अब हम लोगों ने धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया. सो चेक दिस, एज वी आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी एट दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी XL equal to XC. ठीक है, at this particular frequency means resonant frequency, we get XL equal to XC. तो इस वैल्यू पर आकर करंट अपने पीक वैल्यू को अटेन कर लेती है. द पीक वैल्यू इज द I0, दैट इज द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. सो मैक्सिमम करंट फ्लो होने लग गया. दिस इज मैक्सिमम because now the impedance is
मिनिमम, ठीक। अब फिर से आप और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बियॉन्ड भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं, सो करंट अगेन गोज टू डिक्रीज। सो दिस टाइप ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज प्रैक्टिकली यूज्ड फॉर, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक रेजोनेंस बोला है इसको, सो दिस इज यूज्ड फॉर टीवी रिसीवर्स। जैसे आप टीवी के रिमोट में पर्टिकुलर एक चैनल को प्रेस करते हैं, नंबरिंग आपने प्रेस की, सो व्हाट हैपेंस, द टीवी रिसीवर tunes the signal from a desired transmitting station और channel, और आपका जो टीवी रिसीवर है वो भी उसी फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन से रेजोनेंस ऑब्टेन कर लेता है जो ट्यून्ड सिग्नल बाहर से आ रहा है। सो पर्टिकुलरली सपोज यू वांट टू सी स्टार प्लस, तो आपका जो टीवी रिसीवर है स्टार प्लस की फ्रीक्वेंसी पर खुद को ट्यून कर लेगा विद द हेल्प ऑफ रिमोट। सो दिस इज द प्योर एप्लीकेशन ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट। सो मेन बात आपको ध्यान रखना है कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट को आप एक्सेप्टर सर्किट भी बोल सकते हैं। So if the question comes why series resonant circuit is called as the acceptor circuit, we can specify that series resonant circuit allows the maximum current at particular resonant frequency. So only this is the allowed frequency by the series LCR circuit. Hence it is called as the acceptor circuit because it only accepts the value of resonant frequency and it rejects other frequency. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि रेजोनेंस में आप किस तरह से बोल सकते हैं कि बेटर सेलेक्टर है या फिर सर्किट की क्वालिटी कैसी है। सो दिस इज डिनोटेड बाय क्यू फैक्टर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्वालिटी फैक्टर। सो इसको हम लोग मेजर करते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के टर्म्स में। जो ग्राफ जस्ट अभी हम लोगों ने देखा इन विच वी आर टेकिंग ऑन एक्स एक्सिस द फ्रीक्वेंसी एंड ऑन वाई एक्सिस द करंट, इस टाइप का आपको ग्राफ मिला था कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर आपको करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिली। तो ये जो आपको पीक मिल रहा है, यू कैन सी दिस पीक, तो ये पीक शार्प कैसे होगा, उसका मेजरमेंट कैसे होगा, लाइक दिस इज द शार्पर पीक एंड दिस इज द फ्लैटन पीक। तो कौन सा सर्किट ज़्यादा बेटर है, दिस वी कैन रिकॉग्नाइज विद द हेल्प ऑफ क्यू फैक्टर, ठीक, जिससे आप रेजोनेंस कर्व की शार्पनेस को चेक करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय द एक्सप्रेशन ऑफ the peak value of current or the amplitude of current in series LCR circuit, which is given by Ohm's law, E0 upon under root of R square plus omega L minus 1 upon omega C bracket square, because this is inductive reactance and this one is the capacitive reactance। ठीक, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने लो फ्रीक्वेंसी चूज की थी एंड धीरे 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 आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर फ्रीक्वेंसी को वेरी किया था। देन एट द पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी when this becomes resonant angular frequency, we got XL equal to XC or omega L equal to 1 upon omega C, because this is the condition of resonance. So we will be applying a subscript R here. So we got this relationship, omega R square is 1 upon LC. So omega R equals to 1 upon square root of LC। ठीक है, ये हम लोगों को रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप मिल गया। अब ऐसी सभी वैल्यूज, जैसे आप सिर्फ रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू छोड़ दें और बाकी सभी वैल्यूज को आप चेक करें, चेक इन द फिगर, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस पर हमें करंट का पीक मिल रहा है, सी दिस इज द पीक
यहाँ भी करंट का पीक मिल रहा है आपको एंड दूसरे ग्राफ में भी आपको करंट का पीक मिल रहा है, बट द डिफरेंस इज द बॉटम मोस्ट ग्राफ इज द फ्लैटन, this is more sharp than the bottommost graph and this is the sharpest graph। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर एक अलग से पीक नजर आ रहा है, ये ऐसा बिल्कुल थिन सा पीक बन रहा है। तो हम कैसे मेजर करेंगे? सबसे पहले इसका मेथड होगा कि आप पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर चेक कर लो that what is the maximum current। So suppose I am taking the topmost graph, that is graph number 1, sharpest graph लिया मैंने। तो आपने इसका चेक किया, इसका जो पीक बन रहा है वो I0 पर बन रहा है which is equal to E0 upon R, बिकॉज रेजोनेंस की कंडीशन में पूरा का पूरा इम्पीडेंस प्योर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ये जो पीक वैल्यू थी इसकी आप इस लेवल की आपने I0/√2 वैल्यू ली, मीन्स विच इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स ऑफ I0। सो सपोज यू गॉट दीज टू वैल्यूज, इनको आपने बोल दिया आरएमएस करंट। तो ये आरएमएस करंट IRMS का आंसर आपको मिला ERMS divided by R, which is equal to E0/√2 into R। अब ये आपको यहाँ दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, यू कैन सी ऑन द ग्राफ, किसी भी ग्राफ में आपको इस तरह के दो पॉइंट्स मिलेंगे। ये दोनों पॉइंट्स पर आप चेक कर सकते हैं करंट तो सेम है बट फ्रीक्वेंसीज आर लोअर एंड हायर देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो लोअर फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने कॉल किया IRMS पर, लोअर फ्रीक्वेंसी को कॉल किया ओमेगा 1 एंड हायर फ्रीक्वेंसी को कॉल किया हमने ओमेगा 2। ठीक, अब इन दोनों ही फ्रीक्वेंसी पर आपको आइडेंटिकल करंट मिल रही, मीन्स IRMS which is equal to I0/√2। So what will be the expression for power dissipated by the circuit? Because power is directly proportional to I square. So when we put the value of I as IRMS, this is P directly proportional to I0/√2 square. So this will be giving us power is directly proportional to I0 square by 2. So omega 1 and omega 2 are called as, they are called as half power angular frequencies, because we are going to get the maximum power divided by 2 at these two angular frequencies। ठीक, तो आप फिर से एक बार ग्राफ देखेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व के लिए। तो ये जो आपको ग्राफ का इतना पोर्शन मिला मीन्स द पोर्शन बिटवीन ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, this is called as, the portion between omega 1 and omega 2 is called as bandwidth। ठीक, अब आपने इनको एक्सप्रेस किया, सो सपोज ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा R - डेल ओमेगा। कि आपने ओमेगा आर में से डेल ओमेगा वैल्यू माइनस की तो आपको लोअर फ्रीक्वेंसी मिल गई, ओमेगा आर में आपने डेल ओमेगा वैल्यू प्लस की तो आपको हायर फ्रीक्वेंसी मिल गई दैट इज ओमेगा 2। और जब आपने डिफरेंस लिया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल ओमेगा। सो आई होप द पार्ट इज क्लियर कि कैसे मिला ये, बिकॉज ये दोनों के बीच में बैंड विड्थ और द फ्रीक्वेंसी गैप आ रहा है आपके पास 2 इंटू डेल ओमेगा। ठीक है, सो आपने क्वांटिटी मेजर कर ली। व्हाट क्वांटिटी? आपने सबसे पहले तो डिफरेंस मेजर किया था। ठीक, डिफरेंस था ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 और द हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर इक्वल्स टू मिला 2 डेल ओमेगा विच इज कॉल्ड एज द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट।
एलसीआर सर्किट का बैंडविड्थ बोल दिया आपने। अब अगर आप एक और कैलकुलेशन करते हैं, मीन्स द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी divided by the band width. So this we can called as the sharpness of the graph. This is the sharpness of the resonance curve, and it is measured by a coefficient which is also called as the Q factor, Q factor or quality factor ऑफ द सर्किट। ठीक है, सो क्यू फैक्टर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? दिस इज द आंसर फॉर क्वालिटी फैक्टर। चेक दिस, क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर ऑफ a series resonant circuit is defined as the ratio of the resonant angular frequency to the difference in the two frequencies taken on both sides of the resonant frequency, such that at omega 1 and omega 2, the current carries the value Irms, means 1 by root 2 times of the maximum current flowing in the circuit. अब आप recall करें, फिर से ये formula लिखें. So Q is equal to resonant angular frequency upon 2 into del omega. So when we put omega as 2 pi f, this is 2 pi FR divided by 2 into 2 pi into del F. This 2 pi will cancel, and we get the answer resonant frequency upon 2 into the frequency gap or the band width. So if we are talking for the dimensional analysis, we check that frequency and frequency will dimensionally cancel. 2 is a number, therefore it will carry no dimension. So we may have quality factor or Q factor as the dimensionless quantity. ठीक है, ये आपको मिल जाता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी. सो इफ द वैल्यू ऑफ Q is high, it means the value of the gap, this frequency bandwidth, will be small because Q is inversely proportional to del F. तो अगर आपको रिक्वायर्ड है कि हमको हाई वैल्यू चाहिए Q फैक्टर की, तो आपको ये जो del F का गैप है वो लेस लेना पड़ेगा. And if the gap is less, we will be getting sharpness in the current and the circuit will be sharper, and hence we can say that series resonant circuit will be more selective. ठीक है, quality wise that will offer us good values. Hence we can say that in the resonance curve, जो अभी हमने sharpness का resonance curve consider किया, इस टाइप से ये जो आपने sharpness curve लिया, this value is, this is FR, एंड ये आपको करंट की वैल्यू मिल गई, द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज I0. फिर हम नीचे आते हैं लेवल पर, दिस इज सपोज 100 I0, देन वी आर टेकिंग अबाउट 70.7 टाइम्स ऑफ I0. इट मीन्स IRMS वैल्यू जब हम लेते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट टू वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज. एक तो आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी मिली F1 एंड दिस इज द हायर फ्रीक्वेंसी F2. सो ये जो आपको लोअर फ्रीक्वेंसी साइड मिल रहा है, लोअर फ्रीक्वेंसी साइड, दिस इज गिविंग अस द इंडिकेशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ठीक, और ये जो आपको हायर फ्रीक्वेंसी साइड मिला, दिस इज गिविंग अस द इंडिकेशन ऑफ द inductive reactance. Therefore, we can distribute the graph into two parts. So again revise the expression for Q factor. This is equal to resonant frequency upon 2 into del F is complete bandwidth, जिसमें से आप डायमेंशनली इसको भी बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी गैप बोल सकते हैं, बट
2 into del f करके आपको परफेक्ट बैंडविड्थ का आंसर मिलेगा. मीन्स from this point to this point. Numerically, this is 2 into del f. Got it? Is there any problem in the topic? Now the next topic we are going to study is the choke coil. तो क्वेश्चन ये उठता है कि हमें 3 कंपोनेंट्स लेने की नीड क्या थी. मीन्स why we had taken L, C as well as R. ठीक है, ये 3 कंपोनेंट्स हमने एसी सर्किट्स में क्यों नहीं लिए. हमने सिर्फ रेजिस्टेंस से ही अपना वर्क क्यों नहीं कर लिया. सो दिस इज द रीजन. If we use a resistance to reduce the current passing through an AC circuit, there will be loss of electric energy in the form of heat. Resistance maximum heat produce करता है due to Joule heating, and that heat produces I square R into T. So we have got a good device which is called as a choke coil, which helps to minimize the heating effect of current. So basically, if the question arises, what is a choke coil? So a choke coil is an inductor जो आपने ट्यूब लाइट्स के स्ट्रिप में लगा हुआ देखा होगा, which is used to reduce AC passing through a circuit. ठीक, तो चोक कॉइल या फिर इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस आप ले रहे हैं L, ये एसी सर्किट में एसी करंट को कम करेगा जिसमें एनर्जी लॉसेस भी नहीं होंगे, विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी. एंड how we do its construction. So it is made up of thick insulated copper wires wound closely in a large number of turns over a soft iron laminated core. ठीक है, ये इस तरह से इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे जैसे हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर में बनाया था. उस तरह से आपने सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर्स लिए हैं. लैमिनेटेड कोर लेने का रीजन कि एडी करंट लॉसेस विल बी reduced. Then choke coil is basically an inductor, so it offers a large resistance. XL equals to omega L. So XL is directly proportional to the frequency. तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाएंगे, द इंडक्टिव रिएक्टेंस विल increase and hence current flowing through the inductor coil will decrease. So average power dissipated in the choke coil, this formula we have already derived, that E RMS into I RMS into cos phi, where cos phi is equal to the power factor, that is R upon Z. So we can write its formula as R upon square root of R square plus XL square. बिकॉज आप यहाँ पर C को नेग्लिजिबल कंसीडर कर रहे हैं, हेंस XC इज इक्वल टू 0. सो आपने XL माइनस XC के प्लेस पर आपने 0 ले लिया है. सो फॉर अ चोक कॉइल L इज वेरी लार्ज, इंडक्टेंस सिग्निफिकेंट लेंगे आप, हेंस R विल बी वेरी स्मॉल. सो जो cos phi की वैल्यू है दैट विल बी nearly 0 and power loss is very small. So जो only losses होंगे एनर्जी के, those are the hysteresis losses, और उनको भी हम लोगों ने सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर यूज करके और मिनिमाइज कर दिया है. Although we know in physics that errors cannot be eliminated. ठीक है, आप उनको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, but they can be minimized. Therefore, with the help of various devices and ideas, we have minimized the energy losses. So this completes the topic of series resonance circuit. Now in the next lecture, we will be